So in yesterday's class we had some idea about whether we just started with Schrodinger equation. So Schrodinger equation had an analogy with the way classical equations of motion, the way we studied them in classical mechanics. The analog of the equations of motion may be Schrodinger's equation of motion. अब ये है कि in today's class what we are going to do is try to see psi की interpretation or other wave equation and the interpretation of psi. How we can interpret it in some physical sense, है ना? Because psi हमने कहा it's not that classic. It's although Schrodinger equation का solution भी है in the form of wave equation, but it's not a typical classical wave where the particles की individual oscillation से disturbance travel कर रही है. Because here the notion of particle is replaced by some intimate waves and particles somehow enmeshed together. And we talk of probability amplitude, where the superposition is maximum. We say the wave or that exists, उसका analog हमने particle का, ठीक है? So it's basically superposition of two or more waves, and where the superposition maximum interfere करेगा, we'll say हम wave नहीं कहेंगे, हम कहेंगे particle. You got me? The analogy is slightly different. So अब ये है कि the yesterday's equation हमारे पास जो आ रही थी, जो if you remember, we had a time dependent Schrodinger equation. This is subscript means r and t. Psi का vis-a-vis time, it's h square by 2m. Del square है ये derivative दो बार है, d2x by dx square d2 space derivative. So you have time derivative on the left hand side, space derivative on the right hand side. It's psi of RT plus this is the psi of R. Okay, so it's evolution of this wave vis-a-vis time. It's dependent upon second order differential of this wave, उसका derivative with respect to space and plus some potential energy. अब हमारे पास ये है कि if we take in the last part of the class we said that this equation has analogy with the classical equations of motion, Hamilton-Jacobian equation. जब हमने e to the power iota k dot x minus omega t को we defined it in terms of e to the power iota s, where s was the action function. So even though that was a classically the way we defined the evolution of a particle, हमने कहा when we made some analogs with this e to the power iota, उसको इसके बराबर we saw some analogs. It had a similar solution as that of this wave equation. अब if we take that construction, तो हमारे पास जो Hamiltonian-Jacobian equation है, if psi is not, हमारे पास psi is basically e to the power iota omega t minus kx, है ना? Where omega's frequency is 2 pi by lambda. If it's not like this, अगर हमने Hamiltonian Jacobi equation में put it like this, तो हमारी जो equation आएगी equation of motion, so इसका form आएगा ऐसे. The exercise which we did yesterday, so this is also known as or it's also called Hamilton-Jacobian equation. You can go to any book in classical mechanics, you can see it. So we are starting basically with non-relativistic wave equation. Non-relativistic means many things are not moving at very non-relativistic Schrodinger equation. But once we take a relativistic Schrodinger equation, so there are a lot of things, many electron systems, okay? So इसकी solutions which will come in the later chapters, you can see
it's when we work out the interesting details in different cases. But in the simplest cases, you can say it's a non-relativistic Schrodinger equation, non-relativistic, rather, it's a non-relativistic quantum mechanics of particles. Without spin. फिलहाल हम spin नहीं लेंगे. Then we can little take and this wave equation is time dependent. Schrodinger equation. So it's a time independent Schrodinger equation and it's more or less हम कहेंगे it's non-relativistic quantum mechanics of particles without spins. But we can later include spin also. But to begin with, we always start with the simplest things, है ना? Then we can generalize, make and incorporate complex things into consideration. And then we can also not only go for non-relativistic, we can also go for the relativistic thing also. ठीक है? So that's the point. So before we are going to solve, which we will do it in the later chapters, solving exact Schrodinger equation. पहले हम सोचेंगे ये psi किस चीज का नाम है? ये psi है ना? Psi. What is the psi? What's the physical nature of the psi? इसका और nature of psi क्या है? So psi को हम लेंगे, for example, we can take it as so for example हमने कहा था कल psi is not, we did not talk of psi, we talked of psi star, है ना? या psi square, वही तो है probability interpretation of Born, है ना? Psi is basically an imaginary number, है ना? A plus iota b. Psi star आएगा a minus iota b. So we have not a simple wave, real wave. We have a complex wave. उसका presentation जो हमने ये define किया था in terms of psi. So हम psi को नहीं define करेंगे. Psi star की probability हम निकालेंगे. क्योंकि जो imaginary quantity होती है, you might have studied probability for 11th or 12th class. So probability is not imaginary. Probability is real. So when you talk of something is going to be, you have to go to find it, and इसकी representation हम in terms of complex wave दिया था. The idea of psi doesn't become, so because इसमें probability define करना, we cannot define it. So we have to make it real. So we will do psi star ना, psi square becomes real, and in that context we can define probability. So this is one part. This is one point of it. एक point ये है. The other point is, for example, so what we are going to say is, how the conservation of probability can be guaranteed. Just like in कोई भी thermodynamic system होगा ना, so अगर कोई भी closed system होगा, जैसे है ना, यहाँ 10 बंदे हैं, वो यहाँ जाएंगे, वो उसको मुक्का मारेगा, बट एट द एंड हम कहेंगे यहाँ एनर्जी कम होगी, आधे लोग वहाँ ज्यादा एनर्जी होगी, बट रूम की एनर्जी नेट कांस्टेंट होगी, है कि नहीं? बिकॉज नथिंग गोज आउटसाइड द रूम, एवरीथिंग हैज रिमेन्ड, इवन दो द पार्ट्स ऑफ द रूम during the exchange interaction, some parts will have more energy, more particles are there. So in the same way, जो psi है, जो probability है of that state psi, and that state psi represents quantum mechanical wave. अब ये कोई system में है, it should also get some conserved in some finite space. So psi as a quantity should be conserved, or psi square as a quantity should get conserved. जिस तरह हम in your traditional classes, if you might have studied Griffith या any book on electrodynamics, तो del dot J is equal to है ना d rho by, इसी को हम equation of continuity कहते हैं. जैसे कोई भी करंट है, उसमें अगर करंट का कितना फ्लक्स आउटसाइड जाएगा, तो जितना जाएगा बाहर उतना ही अंदर भी आएगा. सो दैट नेट फ्लक्स जो होगा, जो जितनी नंबर ऑफ
लाइंस बाहर जाएंगी उतनी, उसी को हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी कहते हैं, है ना। या फ्लूइड में भी इन द क्लोज सरफेस कितना फ्लूइड बाहर जाएगा, कितना वापस जाएगा, उसका डेरिवेटिव विज़ावी टाइम विल कम आउट टू बी कांस्टेंट. So we are going to have the same property for this psi, even though it's a complex wave which is existing, but it should have properties similar to the wave in that classical sense, the way we studied in electrodynamics or the way we studied in fluid dynamics. ठीक है, del dot J. तो sorry, yes, that's fine. So हम traditionally we used to study them in जो हमारे पास ये था d rho by dt plus del dot J is equal to 0. So how will we get it? Sorry, मैंने इक्वेशन मिटाई थी नहीं, I had not to. इसको I'll just again write it. RT. So we are going to do दो algebraic steps हम करेंगे which will make you come to this point. ये आपको इस बात तक पहुंचाएगा. कैसे पहुंचाएगा? So we'll do 1-2 steps. हम क्या करेंगे काम? ये जो हमारी इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन है, तो पहले इसको psi के मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय psi, है ना, हो गया एक स्टेप. दूसरे स्टेप में मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय psi स्टार. ठीक है, मल्टीप्लाई श्रोडिंगर इक्वेशन बाय psi, फिर psi, देन उनको दोनों का डिफरेंस करो आप. ठीक है, तो द डिफरेंस विल बी लाइक दिस आप. सो इट विल बी d by dt of multiplying psi and psi star and multiplying it by psi then psi star. So it will be psi star psi plus h by 2m. डेल्टा हमारा बाहर निकलेगा, ये आएगा ऐसे psi स्टार डेल psi माने psi डेल psi स्टार. एंड जो सिंस इसमें भी v psi है उसमें भी v psi, ये दोनों कट जाएंगे. सो इट विल बी द इक्वेशन विल टेक दिस फॉर्म. आप अपनी जगह करना, या इट विल नॉट टेक मच टाइम. इसका psi स्टार मल्टीप्लाई करो, then it पहले इसको psi से मल्टीप्लाई करो, देन यू मल्टीप्लाई इट बाय psi स्टार एंड टर्म सबट्रैक्ट. सो इधर इस इक्वेशन का दिस विल कैंसिल, दिस टर्म विल कैंसिल. ठीक है, वंस यू डू इट, सो इस इक्वेशन का फॉर्म ऐसे आएगा. सो यू विल सी द इक्वेशन विल हैव अ फॉर्म दिस, है ना, रो कौन से है हमारा? इट्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में करंट डेंसिटी है या फ्लूइड है, उसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा. ठीक है, सो यू कैन, उसका जो एनालॉग है हमारे पास, रो का एनालॉग हियर इज psi स्टार psi, व्हिच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वेव, कॉम्प्लेक्स वेव. सो एंड दिस एंटायर टर्म जो डेल, इसको आप इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी डिनोट कर सकते हैं. The way yesterday we had an analogy between Schrodinger equation and the Hamilton-Jacobian equation as a wave equation. Even though both of the two psi वहां पर था wave, a different idea, but and वहां s था, that was a classical particle. But even though we had an analogy in that sense. In the same way, if we do some algebraic manipulation here, multiplying by psi star and उनको subtract करके, the equation has the same form as if it's a equation of continuity. Provided psi star psi जो है, it's a probability of the given state. Because psi खाली या psi star खाली, it's a complex quantity. Probability आपने doesn't come in terms of complex. Probability का कोई real value होता है. So that's why we take psi star. So this has an interpretation. इसको आप
रो के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस एंटायर क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ, अगर करंट डेंसिटी है या फ्लूइड कोई भी किसी सिस्टम में निकलता है या बाहर आता है जाता है, so it comes out to be constant. So this is one way of interpreting the same thing. where रो को हम ऐसे लिखेंगे C psi star psi and J can be written as CH by 2 m iota psi star delta psi minus delta psi star psi. Now there is an exercise in the book where he says derive 3.4. इसको derive करो और where B is being real. So it's an exercise, you try to attempt it. ठीक है? That's the point. Now what we are going to see is if it's like this, if this is psi is like this, rho, इसका आइडेंटिटी हमने rho किया, इसका हमने इस करंट डेंसिटी किया. Now since this entire जो हमने नॉर्मली जो इक्वेशन थी ना हमारे पास फोरियर इंटीग्रल का माइनस इंफिनिटी टू, है ना, वे में स्टार्ट फ्रॉम हियर इट मे गो, बट इन रियल केसेस कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इट विल, उसका कोई ऑर्बिट होता है सिस्टम में, इट हैज सम फाइनाइट स्पेस, बट दैट फाइनाइट स्पेस में भी कोई वॉल्यूम होगा, फाइनाइट वॉल्यूम होगा जिसमें वो इंटीग्रल डिफाइन किया होगा क्लोज सिस्टम. ठीक है. सो जो प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन की या फोटॉन की या जो भी क्वांटम पार्टिकल की, दैट्स प्रॉपर बी, तो इट विल बी सम फाइनाइट इन सम क्लोज्ड सिस्टम, in some closed system. The way we define in course is like charge inside a closed surface, है ना, is equal to Q by, अगर inside charge 0 है तो E dot ds will be 0. So in the same way you can say it, what's the probability of a given quantum mechanical particle in a given volume gap. ठीक है. So you can say it, so जो probability हमने define की है, we have defined probability here, or we have defined इसकी rho. Rho is the probability amplitude. जिस तरह wave intensity है ना, I square, it's a rho. Probability क्या है? In a given volume, it will come out to be rho is going to be this all space. तो space में भी कितना भी हम define करेंगे, depends upon हम integrations कहाँ से कहाँ तक, है ना, closed space है, open space है, स्पेस का क्या फॉर्म, उसमें वेव है एग्जिस्ट कर रही है, क्वांटम मैकेनिकल वेव. सो इट इफ इट्स इन 3 dimensions, सो वी आर गोइंग टू यूज d3r. इफ इट्स इन 1 dimension, dx dy dz, यू कैन डू अकॉर्डिंगली. तो हम क्या कहेंगे, ऑल स्पेस. सो दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज अ रो इज बेसिकली व्हाट, क्या, psi star psi. सो इट्स अ स्टेटमेंट, इट इज इक्वल टू 1. इट्स इक्वल टू 1 मतलब क्या हो गया, इट्स सॉर्ट ऑफ कंजर्व थिंग. जैसे टोटल अमाउंट है ना, ये 1 ही आएगा, इट विल बी कंजर्व. टोटल वेव जो भी होगी ना, द डिफरेंट पार्ट्स, दे विल अल्टीमेटली कम आउट टू बी सम यूनिटी इन दैट कंजर्व्ड सेंस. सो दिस का जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है ये psi star psi which is dependent by rho in a 3-dimensional space will come out to be 1. एंड अगर आप बुक्स में व्हेन यू स्टडी, बिकॉज जो इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, सो इट हैज मेनी लेयर्स अंडरस्टैंडिंग. मेनी लेयर्स मीन्स मुख्तलिफ सतहें हैं. जैसे एक चीज को आप उसका मैथमेटिकल फाउंडेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है. सो सिंस यू हैव टू हैव इन दिस कोर्स थोड़ा सा एक फ्लेवर जैसे, है ना, खाना खाने से पहले, है ना, थोड़ा सा टेस्ट ऑफ इट, नॉट स्टडी डीपली. ठीक है. दूसरा होता है कि जो फिजिसिस्ट होते हैं हु आर डायरेक्टली इंटरेस्टेड इन हाउ थिंग्स वर्क इन लैब, वो एक लेवल. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द मैथमेटिकल वे, हाउ कैन डिस्क्राइब इट मैथमेटिकली, वो भी एक लेवल है. ठीक है. सो एक लेवल जो मैथमेटिकल है, हम नॉर्मली जो कहते हैं, वी से इट लाइक दिस, psi star psi is quadratically integrable.
which will come and come. उसको हम L2 space भी कहते हैं, which will not say it. That's it. And one important thing is that since we are basically there is a general prescription which I'm emphasizing again and again, Fourier way of how we can add two or more waves of same or different amplitude. There is a general procedure out in Fourier transformation or Fourier analysis. So we are going to import that technique or technology in mathematics in our study of quantum mechanics. And quantum mechanics में जो ये particles हैं, इनमें wave properties भी होती हैं and particle properties भी होती है, तो हमारे लिए they will come handy. So as an electron is not one electron, it's a series of waves individually. Electron भी अपने आप में बहुत सारी waves हैं, they are continuously interfering, है ना? And where the waves interfere maximum, तो हम कहते हैं probability amplitude वहाँ पर electron exist कर रहा है as a particle. This is the thing. It's not a particle. There are waves. Electron is itself composed of different waves, or proton, or any subatomic particle, or any quantum particle for that matter of fact. So हम क्या कहेंगे? अगर हम इसको quadratically integrable means you can integrate some function. Differentiation means you try to find a derivative of a function, है ना? कोई function इसका derivative है. d by dx of some function, है ना, is 2x. Integration वापस आएगा x क्या? So differentiation is process of finding a derivative. Integration है कि derivative given है, you will get the function back. But in the entire process the function is continuous, ऐसे, है ना? कोई कट नहीं आता है space time. ठीक है? So in the same way, अगर हमारे पास ये है, the point which I want to emphasize is that if it is quadratically integrable, quadratically just we suspend it, what do you mean by quadratically, और इसको L2 space भी कहते हैं, मगर ये integrable है. Integrable में जिस space में चल रहा है वो कहीं पर काट नहीं आता. Suddenly it will not disappear and फिर appear, ऐसे नहीं, ठीक है? इसकी exchange energy होगी in discrete amounts, वो तो है, but it will not suddenly disappear and suddenly come out. So that's the point. So that means if it's quadratically integrable, so a broad wave packet जो होगा contains many wavelengths, जो मैंने कहा था wavelengths. जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो भी तो वेव ही है ना एज सच. अब यहाँ सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और दे आर इटसेल्फ मेनी वेव्स इन इट दैट सेंस. सो वी कैन क्वाड्रेटिकली इंटीग्रेबल फंक्शन होगा, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं किसी भी वेव पैकेट का विच इज इंटरनली कंपोज्ड ऑफ मेनी वेव्स, है ना, जिसका सुपरपोजिशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं इन अ गिवन स्पेस. अब इसमें है देयर आर मेनी इंटरप्रिटेशंस ऑफ व्हाट वी मीन बाय पोटेंशियलिटी. एक फिजिसिस्ट उसका नाम है डेविड बोहम, यू कैन सी इट. हाँ, सो there are various interpretations of quantum mechanics. एक होता है realistic, deterministic, है ना. मैंने स्टार्ट में किया था तो मैंने talked of equation of motion, हम कहते हैं equation of motion can be determined. So this stems from a certain philosophy, उसको कहते हैं determinism. Given equations of motion, you can determine any state of a particle in future भी. From past, present and future. Future also can be determined. ये planet यहाँ पर है, 500 साल के बाद ये planet कहाँ है ना, यू कैन डिटरमाइन फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ मोशंस. ये कोमेट यहाँ है, 76 ईयर्स के बाद हेलियस कोमेट फिर वापस आएगा. तो इससे फिजिक्स में एक फिलॉसफी आई कि ह्यूमन माइंड में कैपेसिटी है टू डिटरमाइन द लॉज ऑफ नेचर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. अब क्वांटम मैकेनिक्स में सिंस वी कैन नॉट हैव दैट क्लीन पाथ, दैट डिटरमिनिस्टिक फिलॉसफी वाज समवट स्लाइटली शैटर्ड. अब क्वेश्चन आया कि डिटरमिनिस्टिक फिर क्वांटम मैकेनिक्स है कि
नहीं है, ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ फिजिक्स के मुख्तलिफ व्यू पॉइंट है। एक है कोपरनिकस इंटरप्रिटेशन, दूसरा है बोहम्स इंटरप्रिटेशन, ठीक है, तीसरा है, बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं। सो दिस बुक फॉलोज मेनली कोपरनिकस इंटरप्रिटेशन, बट इन केस ऑफ यहाँ पर इफ यू रीड दिस सेंटेंस, ये कह रहा है कि डेविड बोहम जो है दे आर गोइंग फॉर मोर realistic and ontological interpretation of quantum. Ontological means being. एक हो गया ना you exist, दूसरा हो गया आप एग्जिस्ट कर रहे हो, मगर एग्जिस्ट पास्ट में कर रहे हो, फ्यूचर में कर रहे हो, प्रेजेंट में कर रहे हो, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस यू आर, so these are different. Ultimately we are studying physical aspects of the world. Quantum mechanics is a physical theory of these subatomicroscopic microscopic particles. Classical mechanics is the physical aspects of the large scale structure of the universe, है ना। But basically we are studying some reality, some knowledge का कोई branch है, उसी के context में we are using the term ontology, ठीक है। being, अगर हमारे पास present है, कोई चीज past से आ रहा है, present में है, we can predict future. So this is ontology. But अगर quantum mechanics में this somehow is somewhat bit compromised. There can be different interpretations to this. ठीक है, यहाँ पर कुछ अगर पूछना हो, anything you can ask. हाँ, the other point which I just just इन क्वांटम मैकेनिक्स अक्सर आप सुनते आओगे या पढ़ोगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू, है ना। एक्सपेक्टेशन लफ्ज किससे निकला है, एक्सपेक्ट समथिंग, ठीक है। यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज, जैसे कि प्रोबेबिलिटी है ना, मैक्सिमम मिनिमम कहाँ होगा। सो यू आर गोइंग टू कहाँ, जैसे क्लास के लिए ना वेव कहाँ पहुंची, यहाँ 5 मिनट के बाद कहाँ पहुंची। आप 5 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो मास 1 kg होगा, तो पार्टिकल कहां पर होगा 5 मिनट के बाद, बता सकते हैं। इन द सेम वे यहां पर साई फंक्शन है, साई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वेव व्हिच रिप्रेजेंट्स एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और जो भी है ना। सो वी आर गोइंग टू, सिंस हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम सीरीज ऑफ वैल्यूज निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स हो सकते हैं। तो वी आर यूजिंग द वर्ड एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट, परसों हमने वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाला था ऐसे, x माइनस डेल्टा x प्लस कोई मीन अलोंग सम थिंग, हम यहाँ बोथ साइड से कर रहे थे, वहां मैक्सिमम डिफाइन करते थे, फिर कम या ज्यादा कहाँ होगा। सो दिस इज द वे वी डिफाइन दिस कॉम्प्लेक्स वेव। अब ये है कि मसला ये हमारे पास आ रहा है कि इन स्टैटिस्टिक्स वी डू नॉट ओनली वन ट्रायल। अगर हमको एवरेज बिहेवियर निकालना होगा किसी को, हम कहिए व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ these people in the room, हम एक की कम होगी 5 feet, किसी 6, किसी 7, ठीक है। we'll average it out by total number of frequencies, है ना। फिर हम कहेंगे एवरेज हाइट इज इक्वल टू दिस 5.6 या 6.5, ऐसा कुछ करते हैं when you talk of average. So in the same way we don't have one, we have ensemble जो psi है